So this topic is about normal approximation to the binomial. हम लोगों ने ये टॉपिक जो है जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमने इसको टच किया था. अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम इसको देखेंगे कि हम कैसे बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. सो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जिसको हम बिन एन और पी, एन इज़ द नंबर ऑफ experiments and p is the probability of success. So is the number of successes out of n independent trials with probability of success p for each trial. So हम एक ही ट्रायल को जिसके अंदर probability जो है उस ट्रायल की थ्रू आउट जितने भी हम ट्रायल्स करते रहेंगे उसमें p जो है वो कांस्टेंट रहेगी. So let's say ये कॉइन है, कॉइन को हम फ्लिप करते हैं. सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, सो सक्सेस जो है लेट्स से हेड इज़ द सक्सेस. सो ये हम इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हम इनको फ्लिप करते रहें. सो जिसमें n इंडिपेंडेंट, n इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स इज़ ऑलरेडी लेट्स से 5 इज़ ऑलरेडी इन एडवांस, हमें पहले से पता है. और probability of success जो है वो इन थ्रू आउट जो है ना probability of head जो है वो constant है 0.5 है, fair coin है. So this is binomial experiment. इसमें हम लोग इंडिकेटर वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर हम लोग लेट्स से जितने भी x1, x2, x3, xn तक जो भी हैं, अगर xi जो है उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं. इसको हम इंडिकेटर वेरिएबल के इफ़ इट इज़ इफ़ द ट्रायल इज़ सक्सेस तो हम उससे कहते हैं कि वो 1 है. यानी कि यहाँ पे लेट्स से अगर इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें हेड और इसमें टेल आया, तो लेट्स से दिस इज़ x1, x2, x3. तो x1 जो है वो 1 है, x2 जो है वो 0 है, x3 जो है वो 1 है, x4 is also 1 and x5 is 0. So ये इंडिकेटर वेरिएबल्स जो है ना हम लोगों ने नोट कर दिए कि क्या वैल्यूज़ जो है ना हमारे पास आ रही हैं. सो x जितने भी हैं xi's जो हैं वो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं. बर्नूली रैंडम वेरिएबल्स हैं. बर्नूली हमने डिफ़ाइन किया था, इट कैन हैव ओनली 2 आउटकम्स, आइदर 1 or 0. एंड we have y is equal to sigma I xi. y जो है basically number of successes हैं. हमने यहाँ पे कहा था ना binomial is the number of successes. So y is equal to sigma xi जो है वो actually आपके पास number of successes आते हैं जो कि basically आपके पास binomial आपको जो चीज़ देती है. So y is the sum of IID random variables. So for large enough n, ये important है, large enough n, the CLT, the central limit theorem applies. हमने अभी पिछली टॉपिक में ये चीज़ देखी है कि central limit theorem जो है वो sum of IID random variables है. आपके उसकी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आती है अगर आप सम ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स जो है ना बोलें. सो चूँकि ये भी सम ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स हैं जो बाइनोमियल है, सो इफ़ देयर इज़ अ लार्ज इनफ n तो CLT जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो अप्लाई होगा. सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू अप्रॉक्सीमेट अ बाइनोमियल विद ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं. अगर लेट्स से हमारे पास बाइनोमियल है, y is binomial np, then for large n, अगर वो large n है, y is approximately is given by n normal. So binomial np is approximately normal mu जो है वो होगा if mu would be equal to n times p, because n times p इसका mu होता है.
एंड एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू, ये आपके पास इसका सिग्मा स्क्वायर होता है. सो फॉर लार्ज इनफ एन, अगर आपके पास एक लार्ज इनफ सैम्पल है, जो कि लास्ट टाइम सेंट्रल लिमिट थ्योरम में देखा था, अप्रॉक्सीमेटली 30 की हमने वहाँ पे बात की थी. लेकिन इस केस में इट वर्क्स वेल अगर n टाइम्स p टाइम्स q, q इसमें क्या है, q इज इक्वल टू 1 माइनस p. सो n टाइम्स p टाइम्स q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 अगर आपके पास हो. सो दिस अप्रॉक्सीमेशन होल्ड्स गुड. इसको आप देख सकते हैं R के अंदर एक छोटा सा कोड स्निपेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि n is 10, p is 0.5, it means q is also 0.5. So n times p times q would be equal to 10 times 0.5 times 0.5. So this becomes, so out अगर हम करें d binom. So d binom क्या चीज़ है, d binom आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है. सो x इज़ 10, 0 से 10 तक आप वैल्यूज़ ली के आपने उसको उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाली x n और p के साथ. सो उसको अगर बार प्लॉट करें तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो है ना वो आपको शेप जो है नॉर्मल निकलती है. सो आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n और t के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एंड देखिए कि आपके पास क्या वैल्यूज़ जो है ना, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आती है. एक छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं. सो देयर इज़ अ कैंडिडेट A who believes that she can win an election if she gets 55% of the vote in precinct 1. Precinct 1 आप कौंसल, यूनियन कौंसल टाइप कह लें कि अगर वो एक बड़ा एरिया है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा एरिया, दिस इज द प्रीसिंक्ट 1. शी बिलीव्स कि अगर इफ़ शी कैन गेट 55% वोट्स हियर, सो शी वुड बी एबल टू विन the whole region. Okay, so assuming that 50% of precinct 1 voters favor her. Okay, so the probability of precinct 1 voters favoring her is 0.5. And n is equal to 100 random voters show up. What is the approximate probability she will receive at least 55% of their vote? So जो n है हमारे पास एग्जाम्पल 100 रैंडम वोटर्स शो अप करते हैं, और जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है इस एरिया के अंदर वो 0.5 है उसको जो फेवर लोग करते हैं. सो हमने ये देखना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एटलीस्ट 55% ऑफ देयर वोट्स जो है वो कितनी है. ओके, सो लेट्स अस्यूम कि we'll go to the next page. So let's assume कि y is the number of voters for candidate A, for her. हमें चाहिए क्या, we want the probability that y divided by n, the number of voters divided by n, okay, 100 should be greater than and equal to 0.55. This is what you actually want. Because y divided by n is basically y bar. Okay, y जो है it's the total number of voters for her जो हमने assume किया.
So y bar would be y divided by n. Alright, so हमने निकालना ये है कि y divided by n is greater than equal to 0.55. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम या अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि probability that y minus 0.5 ये उसकी divided by square root of 0.5 times 0.5 divided by 100 should be greater than or equal to 0.55 minus 0.5 divided by, so square root of 0.5 times 0.5 divided by 100, right? So ये हमारे पास z बन जाता है y divided by n भी, so that's y bar. Z is greater than or equal to 0.05 divided by 0.05, which is probability z is greater than or equal to 1, which is 0.1587. So the probability that she would be getting 55% vote in precinct 1 is 15 or approximately 16%. जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जो है हमारे पास 1 minus p binom 54 100 154, यानी कि हमने ये कहा कि तमाम जो वोटर्स आ रहे हैं they can either vote for her or they can not vote for her. ठीक है, तो it's like a 1 or 0. There are 100 trials. Out of 100 trials, हर एक की probability is 0.5 because voters की probability कि वो उसको favor करेंगे it's 0.5. So 0.5 उसकी success है, probability है. 100 जो है total number of experiments हैं, total voters हैं इसके, और total voters in precinct 1 है, और 54 जो है basically ये हमने क्यों लिया, basically अगर 55 is what we want, 55 and above, so 1 minus p binom 54 तक उसकी जो है probability जो है वो नहीं है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि this is the failure, sorry, this is failure, or 1 minus the failure is the success. So exact solution जो है आपके पास जो है वो 0.184 आता है. यहाँ पे हमने continuity correction लगाई है. यहाँ पे continuity correction हमने जब हमने डिस्कस किया था binomial को, तो तब हमने वहाँ भी continuity correction जो है देखी थी. continuity correction जो है नेक्स्ट अभी हम इसको फर्दर भी देख लेते हैं कि हम ये क्यों लगाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. However यहाँ पे एग्जैक्ट जो है तकरीबन 18% जो है इसका सॉल्यूशन आता है. एक चीज़ जो है वो देखने की ज़रूरत सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पे जो चीज़ लगाई है वो कैसे है, बिकॉज़ हमें एक चीज़ पता है कि वेरिएंस ऑफ y डिवाइडेड बाय n वुड बी इक्वल टू, बिकॉज n इज़ अ नंबर 1 by n स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y, ऑलराइट, which is variance of y आपके पास क्या है, ये binomial है, तो 1 by n square np times 1 minus p आ जाती है, which is equal to p times 1 minus p divided by n. Alright, so this is variance of y by n. दूसरा हमारे पास है कि सिग्मा
डिवाइडेड बाय n, इसकी वजह से हो जाता है वेरिएंस, जो कि हमारे पास आती है p 1 माइनस p डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। राइट, सो ये है बेसिकली जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सिग्मा बाय n, और हमने यहाँ पे सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। Okay. So there are different यार्डस्टिक्स जो कि डिफरेंट बुक्स में बताई गई हैं अबाउट कि हम ये अप्रॉक्सीमेशन, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल कब कब यूज़ करें। एक उसमें से ये है कि y by n have approximately the same distribution for large enough n, but large enough n depends on p. So the rule of thumb is approximation works well when this thing lies within the interval 0 1. अगर हम ये जो p plus 3 times whatever it is, if this is within the interval 0 and 1, so this is one of the rule of the thumb कि then the approximation would be good. एक और क्राइटेरिया जो है वो ये दिया हुआ है कि if n, जो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, is greater than 9 times max of pq, यानी कि p और q में से जो भी maximum value है divided by min of pq, let's say p is let's say 0.7 और q is 0.3, तो max of pq is 0.7 divided by 0.3, इस तरह आपके पास min और max आप निकाल लेंगे। So अगर this whole thing comes greater than, if n is greater than this, जो number of trials हैं it's greater than this, तो then this is good enough. However, जो सबसे simplest है वो, और जो practically देखा गया है कि n times p times q is greater than 5, तो ये approximation जो है वो बेहतर रहती है। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन को एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या है। द इशू कम्स जब हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टीन्यूस से रिप्लेस करते हैं। तो डिस्क्रीट में आपके पास सेट वैल्यूज़ हैं, कॉन्टीन्यूस जो है वो थ्रू आउट द इंटरवल चल रहा होता है। तो उस केस के अंदर इम्प्रूव करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन को वी यूज़ द वैल्यू फॉर कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हाफ वे बिटवीन द टू डिस्क्रीट वैल्यूज़। ओके, सो ये अगर कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट है, तो हम हाफ वे जो है इनके दरमियान जो है उनकी वैल्यूज़ को जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि अगर हम प्रोबेबिलिटी y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू y निकाल रहे हैं, तो वी ऐड 0.5 टू द वैल्यू वी आर अप्रॉक्सीमेटिंग फॉर, जब हमने लेस दैन एंड इक्वल टू y निकालना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लेस दैन एंड इक्वल टू y निकालना है, तो ये इसका मतलब ये है कि वी वांट लेस देन एन इक्वल टू 4। ये यहाँ पे हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट कर लें, तो हम लोग इसमें ये इसको हाफ वे 3.5 के ऊपर जो है हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0.5 फ्रॉम द वैल्यू अगर हम ग्रेटर दैन इक्वल टू y जो है हम कैलकुलेशंस जो है वो करना चाह रहे हैं। सो फॉर बिकॉज डिस्क्रीट वैल्यूज तो सिर्फ 3, 4 या 5 पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस तो थ्रू आउट हैं। तो जब भी हमने उसके लिए करना होता है तो हम उसके इन बिटवीन 0.5 की जो है अप्रॉक्सीमेशन जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम आगे देखते हैं। एग्जांपल इस चीज़ को समझाने के लिए बयान की गई है कि अगर हम एक फेयर कॉइन को फ्लिप करें 100 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी कि हमें एग्जैक्टली 50 हेड्स मिलेंगे वो क्या है, बिकॉज इट्स एन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बिकॉज y इज़ द नंबर ऑफ हेड्स, हमें एग्जैक्टली 50 हेड्स मिलेंगे, तो इट्स बाइनोमियल n इज इक्वल टू 100 एंड p इज इक्वल टू 0.5। अगर हम इसी को अप्रॉक्सीमेट करें बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम,
तो नॉर्मल mu would be np is equal to 50 and sigma square would be npq is equal to 25. सो करेक्शन हम लोग क्या लगाएंगे? करेक्शन लगाएंगे, प्रॉबिलिटी हमने निकालनी दैट y इज़ इक्वल टू 50. सो इसको निकालने के लिए कॉन्टिन्यूटी करेक्शन होगी कि y को हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 49.5 और लेस दैन इक्वल टू 50.5 जब लेंगे देन दिस इज़ गोइंग टू बी प्रॉबिलिटी y इज इक्वल टू 50. हम लोग एग्जैक्टली नॉर्मल में तो कभी निकाल भी नहीं सकते. सो इसको कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के ज़रिए बिटवीन 49.5 एंड 50.5 हम निकालेंगे. और व्हेन वी डू दिस, सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोग इससे म्यू this thing we will use sigma. हमारे पास यहाँ से आता है, तो this is how we are transforming into z, and then it becomes phi of 0.1 minus phi of minus 0.1. so ये approximation है हमारे पास 0.079, it's like 0.08. और जो एग्जैक्ट है हमारे पास डी बाइनॉम के ज़रिए जो आती है इस ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 0.08. सो अप्रॉक्सीमेटली दोनों जो है सेम आ जाते हैं. सो दिस कॉन्टिन्यूटी करेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट जब भी हम डिस्क्रीट को किसी कॉन्टिन्यूस से अप्रॉक्सीमेट करते हैं. सो द सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर 5 हमने स्टैटिस्टिक्स और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने देखा था. वी टॉक्ड अबाउट के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिराइव की जाती है. एनालिटिकली इट वाज एग्जैक्ट बट टफ, समटाइम्स इम्पॉसिबल. यूजिंग सिमुलेशन इट वाज ईजियर एंड अप्रॉक्सीमेट easier कह सकते हैं इसे आप. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने देखा था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में हमने देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन हमने देखा, एंड फाइनली वी कन्वर्ज ऑन टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. और लास्ट टॉपिक जो है हमने नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल जो है देखा. सो दिस कवर्स आवर सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर 5. इंशाल्लाह हम आगे एस्टिमेशन या इंटरवल एस्टिमेशन जो है सब्सिक्वेंटली हम कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.